मैं लीज पर लेता बेटा, और लीज पर जब लेता मैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, लीज अमाउंट का जो पे करता। लेकिन हायर चार्जेस है, हायर क्या है बेटा, हायर्ड फॉर 5 years, लेकिन 5 साल का पैसा एक साथ दे देता तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, लेकिन हर 6 महीने में दे रहा हूं मैं, तो क्या है बेटा ये, रेवेन्यू। रेवेन्यू। आर यू गेटिंग अंकुश में क्या बोल रहा हूँ बेटा? हाँ सर समझा। समझे? ठीक है बच्चों, और बताइए डाउट्स। और सर इलस्ट्रेशन 5 में सेकंड वाला भी एक बार बता दो ना। कौन से में? इलस्ट्रेशन 5 का सेकंड वाला। अच्छा यही वाला, ठीक है। देखो बेटा, फिक्चर्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 2500 सोल्ड एट 1600। भाई फिक्चर्स है, फिक्चर मतलब फिटिंग्स वगैरह जो फर्नीचर का पार्ट होता है। बेटा एक बच्ची है जुलाई के लिए, उसका मैसेज है, एक सेकंड बेटा उसको ऐड कर लें तो ये आराम से आते हैं बच्चे। उमंग मुझे व्हाट्सएप अगेन करना, आपको व्हाट्सएप करा है लिंक मैंने ना, पारुल को किया, कोई भी मुझे व्हाट्सएप कर दो, अगेन फॉरवर्ड कर दो, नीचे कहीं चला गया वो। ये सर करता हूँ। सर मैंने कर दिया। कर दिया, ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो बच्चों क्या बोल रहे हैं देखो, फिक्चर्स ऑफ बुक वैल्यू 2500, अंकुश कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, सीए में उमंग, ठीक है बेटा। देखते हैं एक बार वो बात करते हैं। फिक्चर कितने का है बेटा, 2500 रुपए का है, सोल्ड 1600 रुपए में हमने सेल कर दी। न्यू फिक्चर वैल्यूइंग 4000 में रिक्वायर्ड, कार्टेज पेड 100। क्या है इसे बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑफिस है अंकुश, अंकुश हाँ सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है हाँ भाई। फिक्चर फर्नीचर फिक्चर्स एंड फिटिंग समझते हो ना, जो लाइट फिटिंग वगैरह सब होती है, फिटिंग वगैरह में जो आता है, उसमें जो जो टूल्स वगैरह जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जो प्लास्टिक एंड ऑल नट्स वट सब चीजें, हाँ सर। ठीक है, फिटिंग। वो सब फिटिंग्स वगैरह क्या है, वो सब क्या एक हर साल चेंज करवाते हो क्या? नहीं ना बेटा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है भाई, चाहे खर्चा कम अमाउंट का है लेकिन बेनिफिट लॉन्ग टर्म है। हाँ सर। मोर देन 1 year बेनिफिट जा रहा है तो क्या है, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, ठीक बेटा। हाँ और ओके इसके सर। अलावा बच्चों बाकी बच्चों प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। इसके अलावा बच्चों अंकुश और कोई सर डाउट बेटा? हाँ सर एक और है, इलस्ट्रेशन 7 का फर्स्ट वाला। अंकुश ने आज पढ़ाई करी है, वेरी गुड अंकुश, है ना। चलो देखो बेटा क्या लिखा है, जब बच्चे डाउट पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। वेरी गुड बेटा, क्या लिखा है, 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग 10,000 बाय द वे ऑफ प्रीमियम। देखो बेटा 50,000 मुझे शेयर इशू करके पैसा मिला, कैपिटल नेचर का, कैपिटल ये तो कैपिटल नेचर का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है 50,000 के अमाउंट, कैपिटल रिसीट। है ना भाई। 50,000 शेयर कैपिटल का है तो भाई फिर तो बात ही नहीं करनी रेवेन्यू की, नाम में ही कैपिटल, हेलो। प्लस जो प्रीमियम है, क्या जो प्रीमियम है क्या रेवेन्यू नेचर का, हर साल प्रीमियम जनरेट होता है क्या, हर साल शेयर इशू करते हो क्या? प्रीमियम तो डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, यस बैलेंस सर। शीट में जा रहा है, बैलेंस शीट में जा रहा है मतलब ऑटोमेटिक की कैपिटल नेचर है वो, तो सर वो कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा ना 10,000। कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, नो डाउट भाई। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट में क्या आता है, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। चलो इसके अलावा अंकुश और कुछ बेटा? नहीं सर पारुल बस। डाउट बेटा? नहीं सर यहाँ तक तो हो गया था कैपिटल और गया बेटा। उमंग डाउट? बच्चों आपको कहीं किसी को डाउट है? जो है राही संतोष बेटा अनम्यूट हो जाओ बेटा एटलीस्ट, चलो ठीक है, आई कंसीडर आज फर्स्ट डे है, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। संतोष राही प्लीज अनम्यूट बैठिए बच्चों दोनों। नो सर। नहीं है
ठीक है, वन ड्राइव इजंट साइंड इन, ठीक है ना। चलिए चलो बेटा, अपन ट्रायल बैलेंस कंटिन्यू कर रहे हैं ना। कल तक अपन ने ट्रायल बैलेंस तक कर लिया। तो बेटा जो बच्चे आज नए जुड़े हैं और सिंसियरली कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो बेटा पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग प्राइवेटली मैं दे दूंगा, अभी डिसाइड किया हमने। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम आए, यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता दीजिएगा ना। बेटा अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे अपन। और बेटा जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है। यूट्यूब का लिंक अवेलेबल नहीं हो तो मुझसे पर्सनली ले लेना, फर्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना। हम लोग उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। हाँ राही संतोष, यस सर, हमने सब्सक्राइब कर रखा है, मिल गया है। सर देखा है आपने, वीडियो देखा स्ट्रैटेजी बेटा? यस सर। देख लिया, ठीक है। उस हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। पहले बेटा वो कम मार्क्स, जो ज्यादा मार्क्स का वेटेज है वो कवर कर रहे हैं अपन, जिसमें कम मेहनत लग रही है बेसिकली। हाँ वो इजी चीजें कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस कर रहे थे बच्चों हम। ट्रायल बैलेंस में कहां पर स्टॉप किया था हमने? मेथड्स पे रुके थे बेटा। उमंग का क्वेश्चन था, सर ये मेथड एक बार बता दीजिए, ये तीन टाइप से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, तीन मेथड से, राइट? राइट बेटा, Yes. मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये बात कर रहे थे अपन कल, है ना? जो मैंने बोला था कल से चालू करते हैं बच्चों। बेटा मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक बात देखो, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हो बच्चों आप लोग? सर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं लेजर से। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं हम? लेजर अकाउंट से। ये लेजर अकाउंट ना बोल के लेजर में बहुत सारे अकाउंट बोल दो। हाँ सर वो ज्यादा सही वर्ड है। मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक। एक तो इनका टोटल बैलेंस है, और एक तो टोटल है इनका, और एक इनका बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर है और ये टोटल है। ये बात सबको समझ में आई? यस बैलेंसिंग फिगर है। एक सेकंड। चलिए बेटा, एवरीथिंग डन एंड डस्टेड, अब कुछ नहीं है डिस्टर्बेंस, सॉरी। चलिए आज बहुत ज्यादा हो गया बेटा। एक तो ये टोटल है और एक ये बैलेंसिंग है। तो बेटा जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वैसे तो भाई बैलेंसेस लिए जाते हैं लेजर अकाउंट्स के, और बैलेंसेस देखते हैं डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बराबर बराबर है या नहीं। लेकिन कुछ इलॉजिकल इररिलेवेंट मेथड भी दिए किताबों में, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, कुछ नहीं। वो मेथड क्या कहते हैं? वो मेथड ये कहते हैं कि भाई ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये टोटल इधर लिख दो, ये वाला टोटल भी इधर लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा एक ही अकाउंट का? नहीं बेटा यू रेज्ड हैंड, यू वांट टू आस्क समथिंग? हेलो, की गलती से हो गया, कुछ मैसेज किया है क्या? कौन बच्ची है? वर्षनी, वर्षनी बेटा ऑडियो ऑन कर ले, वीडियो ऑन कर ले बेटा, कर पाए तो, या ऑडियो भी ऑन कर ले एटलीस्ट। क्या पूछ रहे हैं हम? देखो बच्चों मैंने क्या बोला, तीन मेथड है ट्रायल बैलेंस बनाने की। कितने मेथड है? 3 मेथड दे रखे हैं आपकी बुक में। एक मेथड है सर टोटल मेथड। टोटल में क्या?
दोनों साइड का टोटल लिखते जाओ, कोई फर्क पड़ेगा? सर बिफोर बैलेंसिंग आफ्टर बैलेंसिंग क्वेश्चन ये आता है, बिफोर बैलेंसिंग आफ्टर बैलेंसिंग। सर बिफोर बैलेंसिंग आफ्टर बैलेंसिंग मतलब बेटा यहां पर मैं बात कर रहा हूं सपोज मशीन की, मशीन के डेबिट में 1 लाख रुपए, 2 लाख की और खरीदी, 3 लाख 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया साल भर में, और यहाँ पर बैलेंस बचता है एक हम 3 लाख की खरीदी और डेप्रिसिएशन इसको 2 कर लो, इसको कितना आ गया 4 लाख रुपए का क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर। 5 लाख का टोटल, 5 लाख का टोटल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो सर अभी क्वेश्चन आता है, पहले तो हमें एक मेथड तो हमें समझ में आती है सर, बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में क्या होता है सर? बैलेंस मेथड में क्या होता है? बैलेंस में तो हम तो बैलेंस लिखते जाते हैं, बैलेंस लिखते जाते हैं मतलब सर जैसे मशीन का क्या है डेबिट बैलेंस होता है, तो मशीन का डिफरेंस, मशीन का क्या आ जाएगा सर? मशीन का 4 लाख रुपए क्या चला जाएगा ट्रायल बैलेंस में, बैलेंसिंग चला जाएगा डेबिट। राइट बच्चों? ये कौन सी मेथड होती है? बैलेंसिंग। ठीक एवरीवन। अब बेटा एक बात बताओ, यदि इसी को मैं टोटल मेथड बना दूं, तो यदि मशीन के डेबिट में मैं लिख दूं कितना 5 लाख और क्रेडिट में लिख दूं कितना 1 लाख, तो ये ऑटोमेटिकली 4 लाख से डेबिट बढ़ा रहेगा? यस सर। डेबिट कितना दिखेगा? 4 लाख ही दिखेगा। ये टोटल मेथड की बात है एवरीवन। प्लीज बच्चों जो भी क्लास में है प्लीज समझ में आया? चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए एटलीस्ट, नहीं वीडियो ऑन कर पाएंगे तो। मैंने क्या बोला? बैलेंस मेथड, टोटल मेथड। देयर आर 2 मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। वन मेथड में क्या है कि भाई आपको जो हर लेजर के बैलेंसेस है वो कैरी करने, राइट? बैलेंसेस कैसे करने? सर लेजर अकाउंट बनाना है, उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो, सर बैलेंसिंग फिगर मतलब फिर से एक बार बता दूं, एसेट में आपने एसेट्स की बात कर रहे हैं तो एसेट का जो बैलेंस इधर की साइड का माइनस इधर का करेंगे तो हमेशा बैलेंसिंग फिगर एसेट में क्या आएगा सर? डेबिट साइड बड़ा होता है, इसलिए कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड हमेशा बड़ा होगा। भाई जितना जितना कैश उससे ज्यादा निकाल सकते हो क्या? नो सर। एसेट की वैल्यू उससे ज्यादा कम कर सकते हो क्या? नहीं No, कर सकते ना? तो भाई डेबिट बैलेंस होगा। मतलब सर एक लॉजिक आपने बताया था मैं, भाई जो बढ़ने पर जैसा बिहेव करता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जो बढ़ने पर जैसा बिहेव करता है उसका वो बैलेंस होता है। सर मतलब एसेट बढ़ने पर डेबिट होते हैं, ड्राइंग बढ़ने पर डेबिट होती है, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होते हैं, तो इनके बैलेंसेस क्या होंगे? हमेशा डेबिट। और कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ने पर क्रेडिट होते हैं तो इनके हमेशा बैलेंसेस क्या होंगे? क्रेडिट। और उनका हमेशा कहाँ आएगा? एसेट्स के हमेशा सर, इसी चीज को मैं रब करके लिखता हूँ, एसेट्स को हमेशा कहाँ आएगा सर? डेबिट बैलेंस होगा, इस तरफ आएगा। एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ आएंगे? बैलेंस मेथड में इधर आएंगे। ड्राइंग हमेशा कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। कैपिटल हमेशा कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। लायबिलिटी हमेशा कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। और इनकम हमेशा कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। ठीक बात बच्चों? यस सर। बैलेंस मेथड की बात करो, और वही चीज टोटल मेथड में बैलेंसिंग करने के पहले जो टोटल है, आफ्टर नहीं। आफ्टर लिखने का कोई फायदा नहीं आफ्टर लिखने का। भाई मैं डेबिट में 5 लाख थे, क्रेडिट में 1 लाख था, तो अल्टीमेटली 4 लाख का ही बैलेंस ही तो गया है यदि कैलकुलेशन वाइज देखूं तो। यदि मैं 5 लाख 4 लाख डेबिट कर देता या 5 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट कर दिया तो भी तो 4 लाख से ही तो डेबिट हुआ है नेट ऑफ करके। यस सर। तो लिखने का तरीका अलग है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है लेकिन इम्पैक्ट सेम ही है दोनों मेथड में। यस सर। इम्पैक्ट तो सेम ही जा रहा है भाई, 4 लाख का इफेक्ट जा रहा है डेबिट साइड में, और ऊपर भी टोटल नेट ऑफ करके 4 लाख का ही जा रहा है। आर यू गेटिंग बच्चों व्हाट आई एम टॉकिंग? यस यस सर। सर। राइट? तो कोशिश ये करो कि जिसका जैसा बिहेवियर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, उसको वैसे क्या मारो करो, डेबिट या क्रेडिट करो। सर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में जितना पैसा है बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में, सर बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो जाता है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो जाता है। बेटा जब बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो जाता है ना, जब बैंक में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा निकाल लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एसेट कहाँ रहता है? ये तो लायबिलिटी बन जाता है ना। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। भाई जब बैंक में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा निकाल लूंगा तो बैंक अकाउंट एसेट कहाँ बचेगा? वो तो लायबिलिटी बन जाएगा मेरी।
यस सर। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो जो भी बोलता है कि बैंक का, जैसे अभी एक एमसीक्यू डाला था मैंने, मैं क्या डिस्कस ही कर पाता, इतना टाइम नहीं होता है। बच्चे बोलते हैं ये गलत था वो गलत था, कुछ एक आध गलती भी होती है, एरर होते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन एमसीक्यू एक बच्चा बोल रहा था कि भाई बैलेंस हमेशा, एक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। बेटा वो एसिड रहेगा ही नहीं। फिर एक कोई एमसीक्यू डाला था मैंने अकाउंट में, आई डोंट रिमेंबर, कुछ दिन पहले की बात है, क्विज में। तो भाई वो एसिड रहेगा ही नहीं, वो तो लाइबिलिटी बन जाएगा भाई। एसिड का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ऐसा कुछ बोल रहा था भाई। तो एसिड का क्रेडिट बैलेंस, एसिड का क्रेडिट बैलेंस आप बोल रहे हो, बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, तो एसिड एसिड नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? वो लाइबिलिटी, नेचर चेंज हो जाएगा उसका। नेचर चेंज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। यस सर। क्लियर टू एवरीवन? मतलब आपका एक क्वेश्चन था, उधर दिया था क्वेश्चन में, कैश एज अ डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ, नन ऑफ दीज। तो उसका सिर्फ आंसर ए था, डेबिट बैलेंस। तो बहुत जन बोल रहे बोथ होना चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट, तो वो रॉन्ग। एग्जैक्ट, वो रॉन्ग है, ऐसा कुछ था वो, आई डोंट रिमेंबर, ऐसा कुछ था। वो बहुत ज्यादा वो डिस्कशन का इशू बना लेते हैं, तो कोई क्या होता है, वो सही जगह समझा भी नहीं पाते उस टाइम पे अपन। ठीक है, तो ठीक है, एक दो एरर जेन्युइन होते हैं, नो डाउट, टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं, जिससे टाइप करवाते कभी कभी हो जाता है, अंडरस्टैंड दैट। तो ये चीज क्लियर हो गई बेटा सबको, बैंक ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। तो ट्रायल बैलेंस में बेटा कुछ भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस में मोटा मोटा मान के चलो 3 मेथड होते हैं सर, दोनों का मिक्सचर। सर एक चीज तो बताओ ना, इनमें 3 मेथड बोले आपने, 2 ही समझा बेटा। एक कंपाउंड मेथड होती है, कंपाउंड नाम दिया कि मिक्स मेथड दिया? क्या बोल रहे हैं ये लोग? कंपाउंड है। कंपाउंड बोल रहे हैं। कंपाउंड में क्या करते हैं बेटा? वैसे तो डेबिट क्रेडिट 3 कॉलम बनते हैं, 2 कॉलम बनते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और एक और कॉलम बना लेते हैं बैलेंस का, और उसको देख लेते हैं डेबिट है या क्रेडिट। ठीक है, तो टोटल भी लिखते हैं, बैलेंस भी लिखते हैं, टोटल भी दोनों को मिक्स कर दिए, ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसमें टोटल भी दिखे और बैलेंस भी दिखे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सबको क्लियर है बेटा? जो जो क्लास में कनेक्टेड है बेटा, एवरीवन प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स हेलो, today only I joined this class, can you please tell me, you are telling which chapter? Trial balance बेटा, ट्रायल बैलेंस इसके पहले का हम बेसिक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अब नया चैप्टर चालू कर रहा हूं बेटा, दिस विल बी न्यू फॉर एवरीवन। I'm starting a new concept, new chapter. This will be new for everyone, and the chapter is adjusting entries, opening entry, closing entry वाला chapter। 1.6 study unit 1, 1.6 study unit 1 बेटा स्टार्ट कर रहा हूं। कोई मुझे पेज नंबर बताएगा? 113। 113। सब बच्चे अपने मॉड्यूल्स लेके बैठे बेटा प्लीज। संतोष, राही, यस सर। ईशा, क्या बोला अंकुश बेटा आपने? 113 is a page number. देखो बेटा, ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। जो पहली क्लास में बैठा है उसको शायद ये कुछ नया लग रहा है, बाकी जो बच्चा फर्स्ट क्लास से बैठा है उसको मैंने बता दिया कुछ नहीं है जर्नल एंट्री है। क्या ये जर्नल एंट्रीज? लेकिन एक बार और डीप में डिस्कस करूंगा, ऊपर से बताया मैंने, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखना बच्चों, मैं बोल रहा हूं ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। ठीक बात? अब ये सबसे पहले सर, इज इट पॉसिबल यू टू एक्सप्लेन द क्लासेस इन इंग्लिश? Is it possible? Okay, I'll repeat in Hindi and English in both. I'll try to repeat both in Hindi and English. I'll say in Hindi, I'll say in English. Fine beta. Varshini, is it okay?
Thank you so much. You're welcome, beta. So, what we are doing, we are discussing opening entry, closing entry, adjusting entry, and transfer entry. हम लोग ये 4 एंट्री डिस्कस कर रहे हैं. First of all, question arises: what do you mean by the word entry? Entry means entering a transaction into the accounts, into the books of accounts, right? Entry means entering transaction in the books of accounts. The word entry matlab kya? Word entry means first time, the way you are entering the transaction into the books of account. And journal entry is the first entry point, right? Journal entry पहला entry point है बेटा. Journal entry के through आप books of account में सबसे पहले transaction को enter करते हो. Yes, sir. So entering transaction in the books of account is called entry. So now question arises: what do you mean by the opening entry? Sir, if I had started, if I had started my business for the first time, means like suppose I had started business, मैंने business शुरू किया. Business started on 30th of November, for example. On 30th of November, I had started my business, and on 31st December, March, I should say, on 30th of November, I had started business. I had invested what? Cash account debit to capital, 10 lakh rupees. And after this, I had purchased assets, machine account debit to cash, $2 lakh. Try to understand. Oh, thank you, sir. Now I'm able to listen. Okay, okay, okay. Now, third entry, I had purchased goods, purchase account debit to 1 lakh to cash. Then, yeah, creditor. Huh? Sir, what do you explain? I'll explain all the entries by this transaction. Huh? By this journal entry, I'll explain all the entries. Huh? उसके बाद then I sold goods, cash account debit 50,000 to sales 50,000. I paid expenses, rent account debit to cash 2,000. Only these transactions I had entered into my books. Huh? These are the transactions which took place. यही transaction हुए up till 31st of March. Okay, just assume it. Based on these transactions, what I had prepared? Ledger account. Huh? I'll post first entry. First entry is posting, transferring from journal to ledger. You prepare क्या करते हैं? What do you do? Posting now. When you enter from journal to ledger, it is called posting. So cash account debit. Cash account, we should go to the debit side of cash account. Cash account के debit में चलते हैं. What is the reason for debit of cash account? Cash account debit क्यों हो रहा है? Due to capital. So to capital, isn't it? Cash account got debited due to capital. With what amount? 10 lakh rupees. Right? Next, capital account credited. Now let's go to the credit side of capital account. Capital account credit side. Reason cash. Amount 10 lakh. Right? What I'm doing, I'm posting. Huh? Next, machine account debit. Let's go to the debit of machine account. Huh? Sir, name it a machine account. Huh? To cash 2 lakh rupees. Now let's go to the credit of cash account, because cash account got credited due to the reason kya? Machine. Right? First two entries posting is over now. Next, purchase account debit to creditor. Let's prepare a ledger account called purchase and another ledger account called creditor. Purchase account got debited due to reason what? Creditor. How much amount? 1 lakh rupees. Creditor account got credited due to reason what? Purchase 1 lakh rupees. Right? Entry over. Cash account debit to sales. Cash account increased due to reason called sales 50,000. Sir, make it 1 lakh. I'm changing transaction. It's for I'm putting 1 lakh. Okay. And sales account credit by cash 1 lakh.
over. Rent account debit to cash. Rent account, rent ledger to cash. How much? 10,000. So 2,000. No. Make it 24,000. Not around 24,000. 10,000 per month. 1,20,000. 1 lakh for the ease of calculation, right? Sir, 1 lakh I am taking it. ज़्यादा realistic नहीं होता है. 1 lakh and buy cash. Buy rent 1 lakh. If this posting is clear to everyone? Is this posting is clear to everyone? Everyone. Yes, sir. Hello. Everyone, type in chat box. Hello. Please, Santosh, Varshni, please type in chat box. Huh? Now, what I have to do? I have to balance all these accounts. What is the balancing figure? 11 lakh. Sir, by balance carry down. 11 minus 3, 8 lakhs. Right? 8 lakh is my balancing figure. Huh? Right, sir, why don't you prepare trial balance? ₹8 lakh, huh? Debit side, trial balance में debit balance होता है. Now next, capital. 10 lakh capital balancing figure, sir, credit side balance आएगा 8 lakh, 10 lakh, sorry. 10 lakh, 10 lakh. And credit balance, right? Now next, sir, rent. Achha, rent I didn't put rent. Count debit to cash. How much rent? 1 lakh. And sales, buy sales 1 lakh. Sorry, buy cash 1 lakh. Balancing figure. By balance carry down 1 lakh expense है. It is an expense. So rent expense increase होने पर debit. So expense debit balance. Huh? Next, sales. Balance carry down 1 lakh. Sales 1 lakh credit balance. Right? Sales ledger is over. Rent by balance carry down. Sir, why don't you put balance carry down? P&L accounts. By income and expenses are closed by a P&L account. Income Yes, and sir. expenses are closed by a P&L account. Sir, rent 1 lakh. Machine. Sir, no depreciation. Assume depreciation rupees 20,000. And by balance 1,80,000. 1.8 lakh. Okay. So depreciation ledger. Yes. So let's do one thing. So is it over how we are doing it? Yes, is it over sir. how we are doing it? Now what I am trying to explain, it will take time. मैं पूरा complete करूँगा तो. What I am trying to explain, expenses and income need to be transferred to P&L account. Try to understand what I am saying, बच्चों. Expenses and income need to be transferred to a P&L account. Expenses और income को P&L account में transfer करना है. तो expenses जब occur हुए थे तो debit हुए थे. जब expenses हुए थे तो debit हुए थे. Now expenses transfer करने हैं तो expenses credit करना पड़ेगा. तो debit क्या होगा? P&L. That's why P&L के debit में क्या आता है? Right? That's why in P&L debit there is an expense. Everyone. Yes, When sir. expenses took place, Yes. it got debited. Expenses account debit to cash. And when we had closed that expenses account, closing matlab transferring that balance to what? P&L account. Because in the year end you have to prepare what? P&L account. In the year end you have to prepare what? P&L account. So now the same logic goes with income. Cash account debit to income.
For closing income which is already credited, you have to debit it. For closing all the income which is already credited, you have to debit it. Now you can debit it by income account debit to P&L account. That's why in the credit side of a P&L account, you put what? Income. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Clear to each and everyone available in class? Type yes in the chat box who is not in the video now. Everyone? Everyone, Varshni clear hai? You didn't type yes. Varshni, can you try? Santosh, Rahi. Bachcho, if still there is any doubt, do ask me, because expenses and incomes closing entry is over. Expense income का closing entry over हो गया बच्चों. Expenses और income देखो basically पूरे accounts में कितनी चीजें होती हैं बेटा? In accounts how many categories there? Asset, drawing, expenses, capital, liability, income. Expenses and incomes are closed via trading या P&L Profit and loss. or trading account, right? Depend upon the nature of expense, whether it is direct or indirect income, direct income or indirect income, right? If it is a direct income, then trading account. If it is an indirect income, then P&L P&L. account. Okay? If it is a direct expense, then trading account. If it is an indirect expense, then P&L P&L. account. P&L account. Right? Now next. So now what about assets, drawing, capital, liability? What about these things? Sir, these are to be transferred to a balance sheet account. Hello? These are Yes, also sir. required to be closed. Matlab means when asset came into existence, asset account got debited. At the year end, you have to close this asset by crediting this asset. Yes. You cannot debit any balance sheet because balance sheet is not an account. Balance sheet is a statement. Because in an account, there is a debit and credit. Haven't you heard anytime ki by balance sheet account debit? Balance sheet is not an account. Balance sheet is in a statement. That's why balance sheet does not have a debit and credit. Balance sheet never come in a journal entry. Yes. Balance Yes, sheet sir. is not an account. It is in a statement. Balance sheet never appears in a journal entry. So means, sir, when liability came into existence, liability got credited. And we can close it, liabilities and assets, by cross matching them, because assets, the same logic goes with capital, because capital got credited when increase cash account debit to capital, asset account debit to cash, and bank account debit to liability. We could assume we had taken loan from bank or something. So it means that this capital, this liability, and this asset need to be closed by cross adjusting against each other. Means like asset which was already debited got credited, liability which is credited got debited, and capital which is credited got debited. It means that, and debit, asset plus liability equal to debit assets. Sorry, liability plus capital equal to asset. Yes, sir. Will automatically match. Debit and credit will match. So this is what called the closing entry for liability, capital, assets. Sir, what about drawing? Drawing should be net off from capital. Sir, drawing should be net off from capital. Sir, what do you mean by netting off? When you will transfer that drawing to a capital account, drawing account is also an account, capital account is also an account. Both are account. So we can decrease our capital by transferring that drawing to a capital account. When capital decreases, capital account debit, and drawing also decreases because it's got shifted to a capital account to drawing. Now the whole drawing transfer to what? Capital account. The whole drawing balance transfer to what? Capital account. Now what we left with? Asset, capital, assets. Sorry, liability, capital, assets. And drawing is already in capital. And income and expenses, this is how we close it. Huh? Is it clear to everyone what I'm talking about? Everyone? Yes. Yes. Yes, Everyone, please type yes in the chat box, please.
Sir, can you please explain that drawing one again? Okay. I'm saying that there is drawing and there's capital. Drawing means reduction of capital, but we pass separate entry when we'll do drawing now. Drawing account debit to cash. But when I'll transfer that drawing account to a capital account, capital got reduced. And drawing which was already debited got credited. Therefore, entry will be capital account debit to drawing. Therefore, entry will be capital account debit to drawing. Therefore, entry will be capital account debit to drawing. Is it clear? Isha was asking. Isha, clear? Huh? Okay. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So now we can conclude that closing entries for income and expenses. Expenses closing entry. P&L account debit or trading account debit to expenses, any expense. But just keep it in mind, if it is a direct expense, then trading, indirect expense, then P&L. Income which was already credited or debited at the time of closing, and P&L or trading account gone. Right? Third, a combined entry. All assets when increase got debited, लेकिन while transferring it or while closing it, it got credited. Just a minute. And liabilities in capital account. If these entries are clear to everyone, these entries are clear to everyone. Each and everyone, bachon. Now, based on this closing entries, we have to pass what? Opening entries. Based on these closing entries, we have to pass what? Opening entries. Sir, when it comes to income or expenses, we hadn't carried forward that income and expenses to the next year. Sir, when it comes to income and expenses, we hadn't carried it forward to next year because we had netted off that income and expenses. We had put all the income here and all the expenses here. And this profit is transferred to what? Capital account. Right? Yes, sir. I didn't carry it forward income and expenses to the next year, but we had carried forward the balances of the assets, liabilities, and drawing to the next year. So it means opening entry will be passed with respect to asset, drawing, and capital. Asset, liability, and capital. So drawing also you had clubbed here? Yes. Less drawing. We had discussed it earlier, right? Right? Here assets will appear, here liability will appear. You mean to say, sir, we carry forward this capital, liability, and assets, isn't it, to the next year? Yes, sir. So it means that opening entry will be passed with respect to asset, liability, and drawing, asset, liability, and capital, isn't it? Yes, sir. By the balances of those accounts which are transferred to the next year will be a part of opening entry next year. Yes, sir. Everyone say yes. Yes. Everyone yes. Type in the chat box or unmute हो जाओ बेटा, at least unmute हो जाओ. You can, आप लोग बोल सकते हैं बेटा, unmute हो जाओ. वीडियो ऑन करने में कोई इशू है तो, या वीडियो ऑन कर सकते हैं. That would be great help. अपन ज्यादा स्पीडली कर पाएंगे आगे. So, but means that when it comes to opening entry, sir,
Again, in the books of account, while closing the assets and liabilities, we had credited assets and debited liabilities. Now again, we will debit what? Assets, and credit what? Liabilities and cap. Isn't it? Yes, sir. Everyone, why only this entry? Because these are the balances which had been carried forward from last year. Income and expenses are already netted off. Drawing is also netted off. Everybody's understanding what I'm talking, right? Yes, sir. This will be the only single what entry? Opening entry. Okay. Yes. This will be the only single opening entry. Why single opening entry? Because income and expenses are netted off and drawing is transferred to a capital account. Sir, when it comes to closing entry, there will be only one entry? No, beta. When it comes to closing entry, there you need to close what? Income and expenses both. And income and expenses account, both accounts you need to, ledger account you need to close it by transferring it to the P&L account or trading account. Is everybody understood what I am talking, bacho? Yes, sir. Type yes in the chat box. Now, after this, we'll move to the adjusting entry. Huh? Opening entries, closing entries are clear. Huh? Everyone, please type yes in the chat box. For opening entries, closing entry. If there is a doubt, please ask me again. Otherwise, type yes in the chat box, bacho, please. Make it quick, beta. Isha, Varshini. So, next thing. Varshini, you are understanding what I'm telling, beta? I think I'm not getting your chats here. Okay, fine. सर Yes. सर जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है वो एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम एक्सपेंडिचर की भी हो सकती है, सबकी हो हाँ, सकती है हमने- मतलब. हाँ, हमने करा ना. Yes, Varshini. I'm trying my level best. सब हाँ अंकुश, हो सकती है ना बेटा, यही डिस्कस किया ना हमने. Because income and expenses need to be transferred to P&L account. Ankush, is it okay when I'm talking in English? Yes sir, okay. English is common to all, na? Yes sir. Is it a problem? Should I repeat in Hindi? No, No, sir. sir. Good in It is English. okay, na? No problem, na? No, Yes. no. Okay. So what I'm saying, beta, expenses and incomes are need to close because you have to transfer that expenses and income into the P&L account. Because at the year end, you need to calculate profit or loss. But in the beginning, you don't need to calculate it because there is no income and expense for the current year. But income and expenses are of a current year, na? If income and expense doesn't belong to a current year, then it become outstanding expense or prepaid expense or accrued income. Then it become an asset or liability, right? So income and expenses of that period should be net off in that period only. But assets, liabilities, and capital should be carried forward to the next year. That's why at the time of closing, you balance it by the name called balance, brought down, carry down. But when it comes to expenses and income, you put by P&L, by trading account. Yeah, true P&L, to credit. Right? So by those accounts of which you require to carry forward the balance, you close that account by the name balance carry down, balance brought down. Are you getting what I'm talking? Right? Fine. Now let's move forward towards adjusting entries. Again, repeating the same statement which I had told in earlier classes. Closing entry, opening entry are not any separate entry. They are the journal entries. Only the timing of passing an entry makes them opening entry and closing entry. They are nothing more than a journal entry. The basic concepts of journal entries are applied here, but the timing of passing those entry makes them an opening and closing entries. Right, bachu?
Opening entries are, these entries are passed in the beginning of year. That's why these journal entries are called opening entries. These journal entries are passed at the end of a year. That's why these journal entries are called closing entries. The writer should write a better name, closing journal entry, instead of telling it only a journal entry. Closing entries. The better suggested name should be for these now closing journal entries. The writer should add what? A journal in between. Then it will be more easy for you guys to understand, right? Opening journal entry, closing journal entry. Then you can have that understanding. By these are journal entries, nothing more than that. But it is passed at the time of opening, it is passed at the time of closing, right? Please. DMK from Tamil Nadu. No, sir. So, chalo. Is it clear, bachcho? Yes, sir. Now, adjusting entries. Just imagine 1920 transaction took place. I had passed journal entries. I transferred those balances to the ledger account, and then I had prepared trial balance, right? From that trial balance, I had prepared what? Trading and P&L account and balance sheet, right? But there are certain balances, certain entries, which I forgot to pass. Like depreciation not charged. Like I had paid a salary up till February, March salary I hadn't paid the March salary, that's why I didn't pass the entries yet. Salary outstanding last month. Because generally you don't pay March salary in March, you pay March salary in first week of April. You hadn't paid rent. You hadn't prepared bank reconciliation statement, that's why you don't know interest on bank account. And you hadn't passed the entries for the same. You hadn't visited bank, you hadn't. I'm just assuming a traditional sort of a thing. Abhi to you got that account statement in your mobile phone or laptop only. But when it comes to account entries, you hadn't considered that interest on bank account. Are you getting what I'm talking? Yes, sir. So there are certain transactions which are still need to be accounted for. There are certain categories of transaction which still need to be accounted for. For these transactions, you don't need to make it again journal ledger TV. You have to make an adjustment here only. If there is already a salary of 110, you could have add a salary. You will do an adjustment in the available statement of available balance sheet and trading in P&L. You will make an adjustment in already prepared, partly prepared trial balance, partly prepared trading account, P&L account and balance sheet. You will make an adjustment in that. You will make an adjustment in that. You will make a adjustment in that. Although you will use an entry, although that will be written via entry, and that is salary account debit to outstanding salary. Salary account debit to outstanding salary. This salary will be added here, and this outstanding salary will be posted in a balance sheet liability side. Are you getting what I'm telling? So Yes, it means that these are not any separate entries. These are the entries which are passed after preparing trial balance or after trading in P&L account or balance sheet. And for that, you don't have to prepare again proper journal, ledger or trial balance again. You have to make the adjustment in whatever you have right now in front of you. And what is right now in front of you? Trading account, P&L account and balance sheet partly prepared, not finalized. Right? That's why you have to make an adjustment at least in that only. But that to a proper way by passing a journal. Isn't it clear, Bachu? That's why the name is adjusting entries. We'll talk about how to pass an adjusting entries, but that's why the name is adjusting entries. Is it clear to everyone? Please type yes in the chat box. Everyone?
If it is clear, Yes, sir. Santosh, Isha, DMK, and Sir? one more that Varshni. Sir, Mm-hmm. sir, we make trading and P&L account on the basis of cash basis or accrual basis. Accrual basis, obviously, because I assume accrual basis, because when it comes to cash account, cash basis, there generally it is used in case of an NPO, income and expenditure account. Sorry, resident payment account, right? And when it comes to system of accounting, accrual system of accounting, cash basis, unless or until mentioned to, you have to prepare what? Accrual basis, because accrual basis is the right way of accounting. Yes, sir. Yeah, unless or until otherwise mentioned, you have to prepare it via accrual basis. Yes, sir. Okay, although in NP also you go for that income and expenditure on accrual basis, that is also right. So is it clear to everyone what I'm talking, bachon? What I'm explaining, is it clear to everyone? Yes, sir. So earlier I had explained one thing to you guys. जिस पीरियड का खर्चा था उस पीरियड में रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्रीज, these were adjusting entries, right? No, Varshni will suffer. Varshni will feel the pain because it is in Hindi, na? I will repeat it. Everyone can see. Varshni, I will repeat for you. Yes, sir. I'm saying expenses. There can be maximum in the universe 3 probable situations when it comes to expenses. There can be maximum 3 probabilities of transaction in the universe, I'm telling, when it comes to expenses. Expenses of current period paid in current period. Current year paid in current year. Expense account. When we will pay expense of the current year in current period, cash account will credit and expenses of that period will debit. Expense account debit to cash. Is it clear? These entries clear to everyone, right? Yes. Type yes. Guys, I need a quick answer because this is the problematic areas for everyone. Huh? So after every entry, I want answers. Huh? Everyone. So better, guys, please, you switch on your audios at least. I don't allow guys without videos first of all. But what happened yesterday? There was one girl prayed now someone. When I forced her to on video, she left. So that's why I'm not insisting anyone. So guys, please just on your audios at least. Okay, sir. Isha, Rahi, audio, video, which mode is more comfortable for you guys? Please open that audio, video. At least one mode you should be connected. Yes, sir. Because after every transaction, I need to get an assurance कि जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, they were getting all that. Everyone, please make it quick, please. So, expenses of the current year paid in current year. Expenses of the current year not paid in current year. हिंदी में बोले तो जिस पीरियड का खर्चा है उस पीरियड में पे कर दिया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. जिस पीरियड का खर्चा है उसमें पे नहीं करा तो एक्सपेंस तो है इस पीरियड का. There will be an expense of the period, but it is not paid. That's why there is a liability which needs to be paid later. That's why to outstanding expense. Expenses account debit to outstanding expense. Next, expenses of next year paid in current year. Paid in current year.
It means that expenses of next year paid in current year means there will be an outflow of cash. There will be an outflow of cash, guys. But the current year, it was not an expense of current year. It was an expense of next year. That's why you hadn't debited the current year expense account. You had debited an asset whose benefit you will get in future. That is prepaid expense. There originate an asset whose benefit you'll get in future. That is prepaid expense. It means that in the life of an expense, there can be three situations. Expenses of a current year paid in current year, expense account debit to cash. Expense of current year not paid in current year, expense account debit to outstanding expense. Expense of next year paid in current year, prepaid expense account debit to cash. In Hindi, expenses जिस पीरियड का था उसमें पे कर दिया expense account debit to cash. एक्सपेंस जिस पीरियड का था उस पीरियड में पे नहीं करा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक्सपेंस इस पीरियड का था ही नहीं, मैंने पे कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Now you can name any expense, salary, interest, commission, bonus, wages, whatever expense you have to name it, nomenclature is different. Baki treatment, accounting, entries are same. Is it clear to everyone? Sir, Yes. if salary is prepaid, then we will deduct the prepaid salary, no? We will deduct the prepaid salary. Obviously, yeah. She's asking something. I'll get to you. She's asking something. There was entry already passed in account. Salary account debit to outstanding. Salary account debit to cash 130. Suppose 10 rupees per month salary was. Just imagine. For the ease of calculation, I took 10 rupees. Now this salary account already debited with 10 rupees extra. So what I have to do? I have to reduce that expense. This salary I have to reduce it. This is more like rectification. And prepaid salary debited, because this was considered 130 expense, but it should be 120 and 10 rupees should be asset. Try to understand what I'm saying. It was wrongly considered 130 as a salary expense of this year, but it should be 120. That's why I had reduced 10 rupees ka salary of the current year expense and transferred it to the asset account called prepaid salary. Right? It was wrongly transferred 130, but it should be 120. Therefore, 10 rupees salary of 1 month, I had reduced from the expenses. And I transferred that to an asset called prepaid salary. This is she was talking, huh? Everybody understood what I'm telling, beta? Yes. Yes. Yes, beta. This is what you're asking, I think. Hello? Hello? Who was asking earlier? Hello? I hope share clear info. So is it clear to everyone? Right? Yes. If it is clear to everyone, type yes in the chat box, please. Yes, sir. Rafi, Santosh, Varshni, Isha, everyone please type yes in the chat box if it is clear. If it is not clear, please ask out. If it is clear, please type yes. I hope it is clear to everyone. Let's go. So listen. Now let's talk about income. Same logic. In the life of income, there could be three situations. This is more messy. First in Hindi I'm telling, then English I'll explain. Varshni, wait for a couple of minutes. In Hindi I'm telling पहले. जिस पीरियड का खर्चा इनकम थी उस पीरियड में मेरे को मिल गई, जिस पीरियड की इनकम है उसमें मेरे को मिल गई, तो भाई कैश बढ़ा और इनकम बढ़ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम. जिस पीरियड की इनकम थी उस पीरियड में मिल गई, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम. जिस पीरियड की इनकम थी उसमें नहीं मिली तो क्या है, इनकम तो है ना भाई, इनकम तो इंक्रीज होगी, क्या भविष्य में मिलेगी, एक्रूड इनकम नाम का एसेट बढ़ गया, मिल जाती तो कैश नाम का एसेट बढ़ता, बट नहीं मिली तो कौन सा कोई और तो एसेट बढ़ेगा, फ्यूचर में मिलेगी,
तो एक्रूड इनकम नाम का एसेट। यस। मतलब जिस पीरियड में मिलनी थी उस पीरियड में मिल गई कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, जिस पीरियड में मिलनी थी उसमें नहीं मिली, भविष्य में मिलेगी तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। भाई अगले साल की इस साल मिल गई तो पैसा तो बढ़ा। भाई जिस पीरियड की इनकम थी उससे पहले मिल गई, जिस पीरियड की इनकम थी उससे पहले मिल गई, मतलब सर कैश तो बढ़ा, लेकिन ये हमारी इनकम नहीं है क्योंकि अगले साल की है, ये हमारी जिम्मेदारी बन गई। अब ये क्या बन गई? अनअर्न्ड। क्या बन गई? अनअर्न्ड इनकम। जिस पीरियड की इनकम थी उस पीरियड में मिल गई कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, जिस पीरियड की इनकम थी नहीं मिली एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, जिस पीरियड की इनकम थी नहीं लेकिन फिर भी मिल गई कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड। राइट नाउ आई एम टेलिंग इन इंग्लिश। Income of current year received in current year. Entry cash account debit to cash asset increase debit, income increase credit. Income of current year not received in current year. If not received, then also it will be an income of the current year. I'll send it to you. I'll send it on our group. I'll send it to you. Income of current year not received in current year. Income will increase obviously, but cash was not received. Whether in future any amount will receive, yes. Today it will be called as an asset by name called accrued income account debit to. Lastly, income of next year received in current year. Then cash will increase, but there is no such income, then income account won't be credited. There is a liability. Why liability, sir? Because you received an amount but you hadn't given the services for the same. You had received that amount but you hadn't given the services for the same. It means there is a liability and the name of liability is unearned income. You hadn't earned that income. Therefore, it is a cash account debit to unearned income. It means income of the current year received in current year. It means cash account debit to income. Income of the current year not received. Therefore, cash won't increase, but in future, another asset, there is an asset in future, it will receive accrued income right now to income. Income of the next year, it means cash will increase, but it is not an income, it is a liability. Unearned income will increase. Is it clear to everyone? Yes, sir. Please type yes in the chat box, everyone. Please do type yes in the chat box, everyone. If there is a doubt, do ask me, bachon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, bachon. Now, next, guys. There is one transfer entry, I think. Tell me page number. Acha. बच्चों please wait a minute. So 116 है ट्रांसफर एंट्रीज का। 116 है। अच्छा एक Sir, I'm not added in group. Can you add me today? Okay, please send me your. I don't have your number, beta. This is my number. You send message at my number. Yes, sir. You are there in my WhatsApp. Okay. Send me your name
And this thing you want me to add it into the group, na? Send me that. Just a minute, beta. So, Parul, please repeat that page number now. Sir, 116. 103. Isn't it? 116. 116. It's 103. Sorry, 103. 116. हाँ जी. Yes. So, this is an opening entry. Everyone, all assets to liabilities to owner's capital. Yes, sir. Next. This is a closing entry. Trading. All expenses, मतलब debit side things are credited and trading account debited. Sales and closing stock debited, trading account credited. By sales, closing stock appear that what here. And then trading gross profit transfer from trading account to P&L account. So this account should be debited and this account should be credited, trading account debit to P&L account. Okay. And then P&L account debit, gross loss, cross shifting by gross loss to gross loss, P&L account credited and trading account debited. Right? Now expenses, P&L account debit to expenses, I told you. Income, respective income account debit to P&L. Profit transfer to capital account increase. This profit debit transfer to capital account. So profit and loss account debit to capital will increase by transferring profit to capital. Okay. Vice versa, loss, capital will decrease debit, capital account debit to loss to P&L account, sir. Right, but right, bacho? Yes, sir. Right, everyone? Yes, sir. Sir, no. 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 Sir, number send kar do. Okay. No, I thought no. You didn't understand. So should we move further? Yes, sir. This is an entry, capital account debit to drawing. Sir, voice नहीं आ रही है और एक बार please. Okay, fine. I'm repeating it once again. This entry, all the stock purchase expenses, fed inward, these are the direct expenses kind of a thing, except opening stock. And we will discuss it later on, stock related thing. But all these are expenses which are already debited, got credited. Two expenses I told you, trading account debit. Yes, sir. All income which is already credited, debited, income account debit to trading account. But a voice, it is clear from my side. There's a network issue from your side, sir. Do you have any idea when will institute? Vaishni, we'll talk later after the class. We'll talk better. So is it clear, bacho? Yes, sir. We'll talk after a couple of minutes. So transferring this trading account to P&L account, it means that this gross loss should be transferred to P&L by, like this, you do cross shifting, but cross shifting means trading account got debited and P&L account got credited. That's why the entry is trading account debit to P&L account. Or when it comes to losses,
Gross loss transfer to the debit. Same P&L account. P&L account credit. Sorry. Yeah. P&L account debit. Trading account credit. Okay. And then expenses. I told you P&L account debit to expenses. Respective income account debit to P&L account. Profit transfer to capital account. Profit and loss account debit. Capital account increases. Capital increases. That's why capital account credited. And vice versa. When there is a loss, capital decreases. Profit and loss credited. Because there is a loss, then it will be transferred to capital account. P&L credit, capital debit, capital account debit to P&L. Right? Hello, Yes, is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Nice. This was an entry we discussed earlier. Capital decrease by drawing capital account debit to drawing. Adjustment entry. Beta, we will continue with the adjustment entries tomorrow. Huh? Everyone, Yes, sir. we'll continue with the adjustment entries tomorrow. Huh? And these rough discussion notes will be transferred to the Telegram account. Discussion note I will transfer to Telegram account. Who wants these notes? Varshni, everyone will transfer to that. I am transferring that to Telegram account. Huh? What was that question? So do you have any idea when the institute will conduct its exam for June attempt? Yes, 23 July. This is the idea I have from institute officially. So we have to be ready by 23rd of July. Okay. Prudence, accounting पढ़ते हैं, फ्यूचर में होने वाले सारी वर्स्ट कंडीशन को आज अज्यूम करके चलो, जल्दी से जल्दी होंगे बेटा जो डेट थी, अनलेस और अनटिल को जाता नहीं. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. एग्जाम शेड्यूल नो आइडिया बेटा, आई कैन नॉट स्पेकुलेट, मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता मुझे. दिस बैच इज फॉर 15 डेज. आई एम ट्राइंग कि भाई 15 दिन में एक बार अकाउंट ब्रश अप हो जाए पूरे कंसेप्ट्स. आप अज्यूम करो बेटा, यदि हो जाते तो अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करके चलो बेटा 23 जुलाई के लिए. जैसी प्रिपरेशन है, बट कोशिश करो एक बार सिलेबस देख के जाओ. जो भी बच्चा है, प्रिपरेशन थोड़ी वीक भी है तब भी कोशिश करो मैक्सिमम अपना बेस्ट को. 23 को हो गए तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके, चल नंबर सेंड कर दो. नंबर टुडे वी हैड कवर्ड विच टॉपिक वन स्टेप. वी हैड कवर्ड बेटा ट्रायल बैलेंस and these adjusting entries. You study unit 1 1.6 topic. Sir, Yes. sir, can we prepare for CMA foundation in 1 month? You can prepare in 15 days. I had given strategy on group. All subjects? Hadn't you checked that strategy video? No, sir. Sir, today only I have joined. Okay, just visit my YouTube channel and see that strategy video. Subjected to condition, you had studied somewhat. That should not be a case you hadn't opened your book even once. Hello? Yes, sir. Be practical. If I'll talk practical, you cannot prepare it from scratch, from zero in 15 days, because it takes time to absorb. But if you had prepared to some extent earlier, you can compile it in 15 days, or you can prepare at least like thoda you can prepare to that level कि at least you can have a chance of passing exams. यदि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, you hadn't studied even a single word, and then or 11 12 भी नहीं पढ़ा अच्छे से, then it is not that easy. If there is a luck, then हो सकता है पास हो जाओ. I won't comment कि नहीं हो पाओगे, है ना? हेलो बेटा, Yes. समझ रहे हो what I'm talking बेटा? Yes, sir. है ना? बाकी आपको कोई इशू हो, पर्सनली आपको कुछ पूछना हो, मेरा नंबर है बेटा, आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको स्ट्रैटेजी बना के दे दूंगा पर्सनली 1-to-1. ना? Yes, sir. है ना? मुझे पर्सनल टेलीग्राम चैट पे मैसेज कर देना, मुझको पर्सनली पूछ लेना, तो मैं आपको आपकी जितनी प्रिपरेशन है थोड़ा सा गाइड कर देना, मैं आपको स्ट्रैटेजाइज कर दूंगा 15 दिन में आपको के लिए. ठीक है बच्चों, स्ट्रैटेजी फॉर जस्ट पास ओनली. नो, यस बेटा, पास ओनली. आई वांट टू स्कोर 350 मार्क्स फॉर दिसंबर. यू आर प्रिपेयरिंग बेटा Vaishni? बच्चों, do one thing. June means June 2022. Okay. Okay, you're asking for June. June will be scheduled exam. I thought अभी June वाला attempt. बच्चों, please do one thing.
Okay, okay, okay. I got that. I got it. Bye, beta. Bye, Santosh. Beta, one more thing, beta. Whatever you need to ask me, please send me a personal chat message on Telegram. In my personal chat box, send me a message in Telegram. I'll reply there. Okay. Right now we're closing class. If there is any doubt, you can text me. I'll reply there. Okay. चला जा भाई. Santosh, उमंग चला जा. Thank you, beta.